afternoon, sir. Any question from exercise 4.1? Afternoon, sir. Question number Question 3. number 3. Question number 3 is trial and error. Here we just have to try. Okay, we have to try, and if there is error, we will continue with another one. Suppose 3a minus 14 equals to 4. Ishan, which numbers we should take? Tell me. Yes, sir. Try with. See if we take 1, what is coming? Minus 3 minus 4, how much? minus 11. Minus 11. So minus 11 is very much far from 4. You know, we want 4. So let us take some bigger numbers. Which number? Suppose if we take 5. तो nth प्लेस पर क्या रखना है हमें? 5. 5. Minus 14. 3 into 5, 15 minus 14. 1. 1. 6 रखते हैं. 3 6 are 18. 18 minus 14. 4. 4. Good afternoon, sir. So in this way, using trial and error, Thank you you, can sir. see that we try with some of the values of variable and we got answer. Sir, doubt. Yes. Sir, today you sent one question, write statement. Sir, first question, how to write statement? Which I given today. Yes, sir. Now wait a minute, we'll discuss. Is it okay, everyone? This is called trial and error. Here we try. Here we try. अच्छा, ये सिंपल इक्वेशन हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं. प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट आप कभी पूछिएगा, बिकॉज अगर आपको समझ में नहीं आया, देखिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जैसे ट्रायल एंड एरर. सो वी गॉट इट कि ओके कुछ पुट करना है और आंसर आएगा. अभी आपको सपोज स्टेटमेंट बनाना है. हाँ, who will tell? Raise your hand, keep your videos on. How to write it in statement? Shreya, Shreya Pinge.
Yes, Yuvraj. No, Iram, you are not audible. Yuvraj, you also not audible, beta. Unmute and speak. Sir, sum of x and 1 is 6. Sum of x and 1 is 6. Good. Any another way of writing the same statement? Sir, may I tell? One is Yes. added to x is 6. 1 is added to X x is is 6. Or any another way? Six is equals to 1 plus x. Very good. So 1 more than x is 6. 1 more than, है ना? अगर आप 1 प्लस कर देंगे x में, so you will get 6. Because 1 more than x is 6. Sir, हाँ जी. sir, I didn't understand that fifth question of 4.1. Sir, I have doubt. Sir, हाँ. 6 minus 1 is 6. If 6 minus x is 1. Sorry. 6 minus x is 1. 6 minus 6 is 1. इसका statement करना है. Yes, sir. Write the statement for this. Aditi, we will see question number 5 after this. Okay? Sir, may I tell? Yes. X subtracted from 6 gives 1. Sir, may I tell? 6 less than x is equals to 1. 6. This is right or wrong? Karima, एक बार फिर सोचिए. Sir, may I tell? Yes. 6 subtract. Sorry. Garima, when you are subtracting x. So what we should say? X less than 6. ठीक है? हमें क्या बोलना चाहिए? X less than 6. X आपको कम करना है किसमें से? From 6. Okay, sir. So it is x less than 6. Okay. Five subtracted from y. Please, what is the equation? Put in your chat box. You may just speak. Sir, I have doubt in trial and error. What is the doubt? Sir, now we wrote m is equal to 1. If we don't get the answer, we can write no, or like you said, m is equal to 5 is not the answer, then m is equal to 6 is the answer. So we can write like that. Actually, we are trying with some of the values. Okay, उसमें हमें show करना पड़ता है. Directly also we can see what is the answer. Okay, but still we try with some of the values. Okay. तो कुछ वैल्यूज से आप ट्राई करके दिखाइए. जैसे भी ईशान ने कहा तो हमने 1 से ट्राई किया, by 4, by 5, then we reach to 6. 5 subtracted from which number? So may I 5 tell? subtracted.
uh, okay. Write the equation for it. 2x is equals to 8. Sir, may I tell? Yes. X is equal to 8 upon 2. No, equation we are talking. So may I tell? Yes. Sir, 2 times a number is equal to 8. 2 times x is 8. Sir, in sixth question of exercise 4.1, we have to write statement only like this. हाँ. Okay, sir. So here times means multiply. Yes. If 2 times x is 8 means 2x is equals to 8. We say 10 times a is 70. What will be the equation? 10A equals A into 10 is equal to 70. 10A. 10A is 10 equal is equal to 70. to 70. Fine. So times means multiplication. Yes. Whenever word come times, we have to multiply 2 times, 3 times, 10 times. Here if you may write or not this. Yesterday also we were discussing what is the sign between these two. So we know it's multiplication, yes? Whether you write it or not, you are knowing that here sign is of multiplication, right? Sir, then in fifth question also we have to write like this statements only. Yes. Same type of statements you have to write for fifth question. Okay, sir. Sir, I have not understood the question number 1 of 4.1 exercise. Who is this? Sir, Bhavya. Okay, question number 1. We just have to put the values. Okay, suppose here is A. If I give you different values, so we have to check for which value we will get. RHS, like we did that day. Suppose if 5x equals to 25. So the value of the solution is given to us. There are 2, 3 values given. Suppose x equals to 0. है ना? तो जब हम 0 रख रहे हैं, when we write 0, 5 into 0, what we are getting? 0. It means 0 is not a solution. So the third column where they ask us, we will write no. Same way for the next one, suppose x is equal to -5. So when we put -5, this is also no. In this way, we just have to check for the value which is given to us. Okay? Okay, sir. Sir, how to write the statement 3 by 5 is equal to 6? Sir, can I? Sahil. Sir, can I answer? No, wait. Yes, speak. Sir,
8 is divided by 3 is gives 7. A divided by 3 is 7. अच्छा ऐसा लिख सकते हैं 1/3 ऑफ A is 7. Yes or no? One third of A is 7. If I ask you 3/4 of P is 15. 3/4 of P is 15. Sir, may I? Yes. T 3 by times of T. 3/4. Sir, may I tell? 3 by 4 times of Into T. T. 15. So what is the sign of multiplication equals to 15. 3/4 of T is 15. T by 4 is equal to 15. Okay. Then equations given to you like 2x minus 5 is equals to 1. What will be the equation for this? ऋतुजा, Ira is getting it. Yes, Ira. Sir, may I tell? Sir, may I tell? Yes, Aditi. Sir, may I tell? 5 subtracted from 2 times x is equal to 1. 5 subtracted from 2 times x is equal to 1. is 1 or give 1. Fine, they both all are same. Like आपकी बुक में ऐसा दिया है, suppose if you write if you take away, if you take away means if you will subtract, if you take away 5 from 2 times x is 1, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम. टेक अवे का मतलब भी सब्ट्रैक्शन है, ठीक है. सर मैं अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हाउ मेनी आर कंप्लीटिंग देयर नोटबुक. आउट ऑफ 80 स्टूडेंट 30 are attending class, and out of 30 how many completing their notebooks on time? Do you all able to write now? Anybody want to ask anything? And it is all simple. Piyush, 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 unmute yourself बेटा, बात कर रहा हूं मैं आपसे. सर, ये समझ में आया आपको? यस सर. ध्यान से देखिए. चलिए, अच्छा बताइए. अभी मैं इसमें कुछ चेंज करता हूँ, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ.
चलो पीयूष इक्वेशन बताओ। 4 subtracted from 2 times 5. हाँ पीयूष, पीयूष किसको माइनस करना है बेटा? 4 subtracted from पीयूष 2. क्या लिखा है? पढ़ो, रीड Sir, कर। can I say? No, wait. Yes, Piyush. 4 subtracted from, तो हम 4 को माइनस करेंगे किसमें से? 2. 2 times y। 2 times का मतलब टाइम्स का मतलब क्या Sir, होता can I है? say? Piyush, times means Piyush बात तो कर बेटा ठीक से। 2 times of y is equals to 1, ये कुछ है ना? 2 subtracted from, sorry, 4 subtracted from 2 times y is 1। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो आप लोग 80 स्टूडेंट के क्लास में है ना, तो जो लोग लाइव आते हैं ना, कम से कम वो तो अपना डाउट वगैरह यहाँ जो मैं आपसे अगर आपका नाम ले रहा हूँ तो प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक, है ना? आप सिर्फ बोलो, मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको पता है, या फिर आपके सब फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करेंगे। Sir, When I I have a take doubt. anybody's name, so he or she must unmute and speak. Is it okay? Sir, I have a doubt. हाँ, yes. Sir, in 4.1 exercise, question number 3, second one. Question That, number, solve the first question by trial and error. तो ट्रायल एंड एरर अभी हमने किया था ईशान के लिए, आपने देखा होगा। वहां पर क्या करना है ट्रायल एंड एरर में? ईशान विल टेल यू। ईशान, ईशान तपा से गायब हो गए क्या? यस, ईशान हमारे आज के गेस्ट थे तो जल्दी घर चले गए, या शायद उनका नेटवर्क नहीं चल रहा होगा। चलिए भैया जी, आप बता दीजिए ट्रायल एंड एरर में क्या करते हैं? Sir, my doubt is that. हाँ, तो ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? ट्राई मीन्स Trying. हाँ, जैसे ये अगर क्वेश्चन है तो p की जगह पे आप कुछ वैल्यूज को रख के देखिए। जैसे आपने रखा 2, तो 5 2 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। ठीक है, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज़ वी वांट 17। तो हम और आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद क्या रखेंगे? 3, तो 5 3 से 15, 15 प्लस 2 17 हो गया, है ना? Okay. So doubt. This is called trial and error. हाँ, Sir, in exam, if like this question come, first we have to write p is equal to 2 is equal to 12 wrong, then into 3. हाँ, yes. I told you you have to show with some of the values, है ना? At least 2-3 values आप show करिए, okay? Sir, the next one is second question C1 of 4.1 C1. exercise. Second 7 question. n plus 5. अभी आज बेटा आप ही बोलो, चलो is equals to 19 का n की जगह पे 2 रख दो। क्या रखना है? So it will be 7 into 2 plus 5 equal to 9. हाँ, 7 into 2 पहले क्या है? 7 to the 14 plus 5 19। Yes, n is equal to is the solution. Solution का मतलब क्या होता है? Who will tell? Wait a minute, Harsh.
outcome of any question. Okay, outcome. Harsh. हाँ सौंदर्य, आप बताओ सौंदर्य, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? n = 2 इज इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब Sir, answer of the question. आंसर मींस व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, जब n की जगह पे हमने 2 रखा तो हमको क्या मिल गया? हमारा राइट हैंड साइड। तो वो वैल्यू इक्वेशन की, n की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 19 आ गया, RHS भी 19 था, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब सेम वैल्यू आती है, so that value which give this equal is called solution. और बताइए 4.1 डाउट क्लियरिंग चल रहा है, वेरी गुड। Sir, हाँ जी, sir, that fifth question last, now we will write p by 2 plus 2 is equal to 8. We have to write in statement form, equation in statement form. so your friends will going to help you. Who is helping here? Raise your hand. Wait Jain. चलिए, I will take name. तन्मय वांड्रे, तन्मय, देखिए मैंने आप सबसे क्या कहा है कि व्हेन आई टेक योर नेम यू अनम्यूट योरसेल्फ, ओके? भागना नहीं। अब देखो तन्मय भी शायद गायब हो गए। नहीं है, तन्मय इज हियर। तन्मय, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो तन्मय। न्यूज चैनल में बोलते हैं ना एंकर, तन्मय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम महालक्ष्मी जी से पूछ लेते हैं। यस महालक्ष्मी जी, आप बताइए। Sir, can I say? हाँ यस। Sir, half added to 2 is 8. हाफ ऑफ पी, ओके? Okay. Sir, may I? हाँ यस होगा। Sir, it will be add 2 to half of p. No, add 2 to half of a number p to get 8. हाँ तो वही हुआ। और कुछ? एनीवन एल्स? यस। P by 2 added 2 gives 8. नहीं तो p by 2 ऐसा थोड़ा लिखेंगे आप, उसको ऐसा लिखिए p divided by 2, ओके? p divided by 2 added to 2 gives 8. Sir, it's second way. If you add 2 to p divided by 2 is equal to 8. Very good, very good. This is also correct. If you add 2 to, हाँ जी, Sir, in place of each 8 can be write gives 8. repeat. In place of each 8 can be write gives 8. हाँ क्यों होगा तो क्यों लिखेंगे? I'm not getting actually what you are saying. Ayushi Singh. Sir, what is RHS? RHS is right hand side. Sir, I have doubt in the question number 6, first one.
Irfan says that he. Ayushi Singh will tell it. Ayushi, unmute yourself. अच्छा, ये जो बच्चे नाम लेने पर भी माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, Irfan says there. Sir, may I tell this? He has. नहीं रुको अभी और कुछ स्टूडेंट्स को चांस देंगे भाई. If he has 7 marbles more than five times the marbles Parmeet has. Parmeet has. वहां पे हिंट भी दिया हुआ है, टेक m टू नंबर ऑफ परमिट मार्बल. इरफान के पास कितने मार्बल है? 37. Sir, may I tell? Please, no, may I? Ayushi is not. I'm not audible to Ayushi Singh. No, I think Ganesh Morley. Ganesh. हाँ ध्यानेश, बताओ बेटा. 7 more than 5 times. Sir, can I say? Why are you not raising your hand? Why? I can see your hands raised. Yes. One, two, three. Only 4 students are getting out of 24, 25 students. Let's see how many raised hands will be there. I am giving 1 minute time. Okay, Sakshi also got 5 students. Anyone else? Shardul also got. Okay. And Shreya. ये क्या नाम है? ऋषिका, समृद्धि सोनी. चलो टाइम भी अब हो रहा है, फटाफट से बताओ. ऋषिका. Sir, can I say? 5m plus 7 = 37. Sakshi, speak. Sir, 7, 5, and 37. हाँ. 7 plus 5 is equals to 37. 7 more than 5 times. तो मोर में क्या करते हैं हम? प्लस, है ना? 7 plus 5m is equals to 37. 5m plus 7 is equal to 37. We can't write like. You may write 5m plus 7. ऐसा लिख सकते हैं आप. Yes, that. Yeah, I have written. 5m plus 7. Okay. देखो इरफान के मार्बल्स गिवन थे. 5, 6. परमीत और इरफान के मार्बल्स में एक रिलेशन है. क्या रिलेशन है? इरफान ने कहा कि उसके पास कितने ज्यादा मार्बल है? 7 more than 5 times of परमीत. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. 7 more than 5 times of परमीत.
तो हमने पहले तो क्या ले लिया m, हमने एक वेरिएबल ले लिया m बिकॉज़ इट इज मार्बल। तो 7 मोर मतलब 7 प्लस करना है, इसमें 5 टाइम्स m, तो 5m plus 7 is equals to 64. Thank you everyone for joining. Sir, Thank हाँ you, जी। sir. sir, from where 37 came? 5m 37 No, is sir, given, 37 क्वेश्चन में गिवन है कि इरफान के पास मार्क्स कितने हैं 37। ओके Yes. ओके फाइन, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Hind.